So today we are outside the NEET center and we'll take the reaction of the parents and the students about their re-NEET exam. Actually, it went very good, and bio was very easy, and chemistry was moderate. And in physics, there are very simple questions for the graphs and all. Okay. So which subject you felt the difficult or consumed your most time? Chemistry, Chemistry was. yeah, actually, physical chemistry consumed a lot of my time. And Was the biology questions all from NCRT? yeah, Okay, so it's very good. like I think I have scored like more than 340 plus marks. Would you like to reveal your score, ideal score, or whatever your predictions are? Like I know I will score above 500 marks, but like there are some questions like which I think is correct, but after going and checking it all, I sometimes like it goes on negative. What one advice you would like to give to the upcoming NEET aspirants? Solve maximum mock papers. Thank you so much. They had a tough time for the past 1 month, and by the grace of God, I think if the parents they have a very strong heart, they made their children to study hard, and that's the reason today the children are writing their exams. So I think by the grace of God, the children should score a good marks, and we are looking forward for all their future studies. What is the one message you'll give to the upcoming parents or aspirants also, the students as well as? Students as well as never lose a hope. You should always keep a confidence, and important is if you believe in God, God can work for you. So that's the aim and goal. And parents, I strongly suggest they should encourage the children as well, and till the very end they should never lose a hope, but they should keep encouraging the children, so that the parents are the real assets for the children, and the children are in return the assets for the parents. Thank you. So it's 5:15 already and the gates are about to open here. Let's see how the students react when they come out of it. आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे जब वो बाहर रहेगा तो? चलिए वो पेपर कैसा देंगे, बाहर आने के बाद पता चलेगा कि उनका रिएक्शन क्या होगा। अगर ठीक किया होगा तो सही है, अगर नहीं तो फिर जैसा पहले कोऑपरेट करते थे वैसे हम अपने बच्चों को कोऑपरेट करेंगे। अगले साल ट्राई करो, क्या आगे कुछ करना है तो इसी में चलो आगे। अभी रीनेट के ऊपर आपका क्या टेक है? अभी तो बच्चों ने तो कोई मेहनत, किसी को चांस मिला है अच्छे से पढ़ाई करने का, कोई अपसेट हो गया है कि ताकि पिछले बार पेपर अच्छे से दिया था तो ठीक है, जिसने किया तो और अच्छी तरह से किया होगा। जो नहीं किया है तो उनके लिए भी पॉजिटिव करेंगे कि अच्छा दिया होगा। अब बाकी पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? हाँ, पेरेंट्स को मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप प्रेशर वाइज मत कीजिएगा बच्चों को। जो कुछ है कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो यहाँ तक आ सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगला चांस अगर चाहते हैं तो दीजिएगा, अगर नहीं आपको कोई और ऑप्शन देना है तो अपने बच्चों को दीजिएगा, लेकिन बर्डन मत दीजिएगा कि यही करना चाहिए। हम फॉलो करते हैं, मतलब हम भी अपने बच्चों को कहते हैं कि जो करना है तो अच्छी करना है। थैंक यू। पिछले वाले नीट और इस वाले नीट में ऐसा क्या, मतलब आपने क्या उसमें नोटिस किया था? ओके, सो मेरी सिस्टर ने 1 साल लाइक स्कूल के बाद 2 साल का गैप लिया। उसके बाद उसने पूरे साल मेहनत की एंड शी वाज लाइक आज मतलब बेस्ट देना था, बेस्ट देकर आई थी। बट जब लीक हुआ पेपर तो उसके बाद से जो 1 मंथ का गैप था इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हर एंड फॉर अस एज वेल। लाइक हमने उसको देखा तो मतलब पूरे टाइम वो डिस्टर्बिंग ही थी। ऐसा फेस मतलब कि
बहुत बेकार था, मतलब कि पूरी मेहनत की, उसके बाद लाइक बेस्ट होना चाहिए था, बट वैसा कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। अब तक से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, रिजल्ट आ जाता, बट ये जो लीक वाला फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए था। इट वॉज वेरी बैड। अब बाकी पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को जो उनके घर में, उनको क्या एडवाइस देंगे अगर आपके घर में कोई नीट एस्पिरेंट है तो? क्योंकि उनके फिजिकल, उनका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। उनको सपोर्ट करिए और उनको ज़्यादा मतलब पैनिक मत करिए, क्योंकि उनके हाथ में भी नहीं है ना, जो है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब आपकी दीदी बाहर आएंगी, जो सिस्टर है, तो आप उनको क्या बोलेंगे जब वो बाहर आएंगे फर्स्ट थिंग? ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। Thank you so much. So with us we have a parent and the NEET aspirant who just gave her NEET. So how was your NEET exam? Really tough. Chemistry, it was moderate to hard. Biology was the easiest. While 2-3 questions were confusing. How would you rate the physics as compared to 25 and like this year's physics? I think it's Than the last NEET before the NEET. It was very physics. All the sections were very based on previously. This आपने पिछले वाले नीट से और इस नीट में क्या मतलब आपने आपको कैसे मोटिवेट रखा? parents are support. अब बाकी पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? अगर बहुत टफ भी था पेपर तो बच्चों को फिर से करने दे। बहुत से पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं आप फिर से मत करो, बहुत सुना हम नहीं फिर से करने देंगे बच्चों को, तो करने दो फिर से, कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं तो अगली बार होंगे। वो सभी बच्चे ऐसे रहे। The NEET exam. So like physics section is moderate and chemistry is also I think to me, I don't know for others, but biology was very easy. Was all the biology from NCERT only? Yeah. More kind of numerical questions than What would you say to someone who's like aspiring next NEET? I think we should practice more. Okay. It's the only thing. Sure. It's not very easy. Thank you so much. तर तुम्ही तुमच्या मुलाला काय सांगितलं होतं पेपरच्या आधी? पेपरच्या आधी सांगितलं होतं की टेन्शन घ्यायचं नाही, बिनधास्त पेपर दे. जरी पहिला अटेम्प्ट नाही झाला तरी दुसऱ्या अटेम्प्टला पण प्रयत्न. आता हे महिन्याभराचं तुम्ही काळ बघितला, त्याच्यामध्ये काय तुम्ही त्याच्यात बघितलं? पोरांना परत परीक्षा द्यायला थोडेसे डिप्रेशनमध्ये गेले, पण त्या डिप्रेशनमधनं बाहेर काढून व्यवस्थित करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. काय तुम्ही बाकीच्या पेरेंट्सला पण एक ॲडवाईस द्याल की तुम्ही डिप्रेशनमध्ये राहू नका, एवढंच मॅडम. तुम्ही जास्त नर्वस होते की जास्त नर्वस होते काय? स्टार्टिंगला स्टुडंट आम्हाला पण वाईट वाटलं त्या गोष्टीचं नाही, खासकरून नीट होणार आहे याचं. आधी चांगलं प्रिपरेशन झालं होतं, पेपर पण छान आलेला, त्याच्यामुळे थोडे हे कळलं म्हणून आपण झाले थोडी. आणि आम्हाला पण वाईट वाटतं 2 वर्ष मेहनत मुलांची वाया गेलेली नाही आहे. आता वेळेस काहीतरी अशी इच्छा आहे. नाही चांगलं होईल, कारण त्यांना 2 महिने 1.5 महिने एक्स्ट्रा मिळालं प्रिपरेशनसाठी. ओके ठीक आहे, जे झालं ते सेकंडरी पार्ट, पण पॉझिटिव्हली विचार करून याच्यामध्ये त्यांना मार्क्स चांगले येतील एवढे. आणि जे करप्शन ते बंद झालं असेल त्याला असं वाटतं मला, सिक्युरिटी वगैरे बघून. त्यामुळं अशी होप आहे की चांगला रिझल्ट येईल आणि कट ऑफ थोडा कमी जाईल या करप्शन बंद झालं. आता जेव्हा तुमचे स्टुडंट बाहेर येईल तेव्हा तुम्ही त्याला पहिल्या मेसेज काय द्याल? म्हणजे काय जे झालं ते फ्री आता 2 महिने टेन्शन घ्यायचं. ओके टेस्ट चालेल. More nervous time for her actually. Yeah, the extra 1.5 month helped. I must say it helped a lot because redoing all those things and going through everything is not easy for her. She had a nervous breakdown, kind of. She cried a lot when she got to know that it is pre-exams. But that's part of it. I mean, even today, if you see here, all the parents are nervous. There's a lot of security. It's like, the fix is not where it should be.
and the fix had to be in the system. The students are suffering, admissions are going to be late, and there's a lot of impact of this delayed exams on JEE and CET also. Imagine a candidate who's appearing both. In absence of this result, they are securing seats in JEE and CET. And by the time they get this result, and if they score good here, they are going to relieve those admissions, and there will be vacant seats there. So it topsy-turvy the entire process as well as the students' life. They are now confused where they should concentrate. So yeah, I mean, we are where we are, but hopefully students after this don't suffer this. सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, पेपर कैसे था? पेपर तो मतलब अच्छा था, उस बार के मुकाबले अच्छा था। 25 के थोड़े करीब लेवल का था। मतलब कि बायो तो इजी थी, केमिस्ट्री भी थोड़ी मॉडरेट थी, फिजिक्स तो ने थोड़ा लेवल किया। तो ज़्यादा टाइम लगा कौन सा? नहीं, हमारा तो हो गया था, तो आधा घंटा पहले बैठते थे, क्या करें, तो जो नहीं बंदा 2 बना रहे थे। अच्छा, चलें। By the speed everyone. Actually, compared to the first attempt, it was good. Like the bio was pretty easy, physics was kind of tricky, and chemistry was moderate for me at least, and I scored a good. How would you react the physics as compared to 2025 and this year's physics? Nah, this year's was much easier, but it is still tough for students. Okay, all the best for your future. Thank you. So, how was your NEET exam? It's good, but physics portion was little tough. Biology was easy. Like I attempted every questions. Like few are left, but many are left in physics. It was hard. Last paper, which was taken before this, that was much easier than this one. It's tough. After this exam, what would you do? What would one thing you would do now? Now I'll just go and sleep till tomorrow 11 a.m. Sure. Of course, what one advice you'd like to give the next year aspirants about the NEET exam? Like solve many question papers, previous year question papers, and mock test. So it will be easier for you. Sir, what one advice you'd like to give other parents who are preparing their children and like being with their journey? Study and study and study. Only study. Sure, sir. Thank you. Congratulations. Thank you. So was the bio out of NCERT or was it from NCERT? What one advice you give to upcoming NEET aspirants? Study because I Yes, was it your? केमिस्ट्री तर मॉडरेट होता आणि फिजिक्स थोडा टफ लेवलमध्ये आलेला, म्हणजे टफ नव्हता, क्वेश्चन थोडे मोठे होते जेणेकरून ते वाचण्यासाठी थोडा टाइम जात होता आणि त्याच म्हणजे टाइम मॅनेज झाला बऱ्यापैकी, पण फिजिक्सचा थोडा सुटला. अच्छा. बाकी कोणता सब्जेक्ट तुला वाटलं की सगळ्यात डिफिकल्ट आहे? फिजिक्स. अच्छा. आणि जर तुला काय ॲडवाइस द्यायची असेल जे पुढच्या वर्षी नीट देतात त्यांना? प्रॅक्टिस, खूप जास्त प्रॅक्टिस करायची. फक्त प्रॅक्टिस म्हणजे बायो पूर्ण NCERT रीड करायची. NCERTची भाषा काहीच नव्हतं आणि बायोचे असे होते, माझा 1 आवरमध्ये बायो झाला. केमिस्ट्रीसाठी फक्त क्वेश्चन सॉल्विंग खूप जास्त करायची. चालेल. थँक्यू सो मच. Easy. So subject wise, would you like to tell us? Physics tough, chemistry moderate, and biology easy. Okay, so what advice would you like to give someone who is like aspiring to give NEET next NEET? Only read NCERT books. How many mock tests did you practice before the NEET exam? 5. 5 full syllabus test. Okay, thank you. The NEET paper. It was a little bit tougher than the third May one, but I think it went rather fine. How would you classify it based on subject? Bio was easy. There were more than I guess 15 to 20 statement-based questions, but it was easier. And chemistry was easy to moderate. Physics was also easy to moderate and a little bit of tough. What one advice will you give to the next upcoming 2027? I actually have no idea. I would probably say practice more questions and focus more on physics. What is the one thing you'll do now after the NEET whole thing? So only. So now, all the best, bro.
Congratulations. It was tough. Means chemistry and physics were tough. Bio was easy. Okay. Was all the bio from NCRT only, or were there questions outside NCRT? Our NCRT only. Okay. So, what is the one thing you'll do after the NEET exam? Means just chill. Just What would be the one advice you'd like to give the next year NEET aspirants? that. कुछ नहीं बस पढ़ लो अभी क्या ही बोल सकती हूँ. Chalega. Thank you. Congratulations. So that was the real reaction of students and parents after re-NEET exam. Some found it easy, some found it tough. But one thing that was common, everyone gave their best. To everyone who appeared today, be proud of yourself. One exam cannot define your whole journey. If you are a NEET aspirant, comment below what you felt about the paper and subscribe for more MBBS and NEET related content.